what we are doing topic that how to rationalize a real number. Okay, so first what we are doing that when we have any number, कोई भी नंबर है, जैसे मैंने कहा √2 + √3 by 2 है ना, तो 2 क्या है, it is a denominator and in denominator if you are having any rational number, आपके पास कैसा नंबर है, any rational number, so there is no need of rationalizing. हमें क्या करना होता है, किसी भी नंबर को रैशनलाइज करने के लिए उसका डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रैशनलाइज इट. आपको उसको क्या बनाना है बेटा, रैशनल नंबर. क्लियर? टू मेक एनी नंबर एज रैशनल, व्हाट वी डू, हाउ टू मेक इट, वी मल्टीप्लाई इट बाय रैशनलाइजिंग फैक्टर. किससे मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को, उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से. ओके, सो इफ यू आर हैविंग एनी नंबर विद द डिनोमिनेटर एज रैशनल, उसका अगर डिनोमिनेटर रैशनल है तो आपको कोई कुछ जरूरत नहीं है उसको चेंज करने की, यू कैन कीप इट एज दिस. ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग 1/2, you can easily say ma'am this number is real number. Okay, this number is rational. नंबर कैसा है, रैशनल. तो क्या इसका कोई रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, नो. बट इफ यू आर हैविंग एनी नंबर विद अ रूट, अगर आपके पास कोई भी नंबर जो डिनोमिनेटर किस में आ रहा है बेटा, रूट में, सो देयर इज नाउ नीड ऑफ रैशनलाइजिंग इट. हम कभी भी अंडर रूट को डिनोमिनेटर में नहीं लिखते. क्लियर? तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रैशनलाइज. तो रैशनलाइज करने के लिए व्हाट इज द नीड, रैशनलाइजिंग फैक्टर. किस चीज की जरूरत पड़ती है आपको, रैशनलाइजिंग फैक्टर की. So just write down these terms that when you are having a by √x, कोई भी नंबर with the denominator this, rationalizing factor is under √x. किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको, √x से. अगर आपके पास है एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 1/√2, 1/√2. So what is the rationalizing factor? First thing, this thing should be clear to you. कि उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बेटा, √2 होगा. उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कितना होगा, √2. अगेन इफ आई एम सेइंग 1/√5, so what is the rationalizing factor, that is √5. if I am having 1/-1/√7, तो मैम क्या इसका माइनस हो जाएगा, नो. आंसर इज सेम. आंसर क्या है, √7. आंसर कितना आएगा इसका, √7. ओके, इफ यू आर हैविंग एनी नंबर्स with the root in the denominator में अगर आपके पास रूट है तो मुझे उसको रैशनलाइज बनाना पड़ता है. एंड हाउ टू रैशनलाइज इट, बाय रैशनलाइजिंग फैक्टर. इससे उसको रैशनलाइज करते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर का यूज करके. ओके, नाउ व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर, द सेम वैल्यू व्हिच इज इन द डिनोमिनेटर. जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है उस वैल्यू को आप ले लोगे और वो क्या बन जाएगा, that will become the rationalizing factor. Okay, now let's see that how to rationalize it. अब एक बार चेक करते हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर को which is rational irrational in the denominator, how to make it rational, कैसे उसको आप rational बना सकते हैं. So what is the procedure, all will learn it. This is very important topic. Okay, so what I am saying that if I have 1/√2, first think of rationalizing factor. The rationalizing factor you have learned it that is equal to √2. क्या बनेगा बेटा, √2. So what is the step here, multiplying and dividing, numerator and denominator by 2. or you can say even simple multiplying the numerator and denominator. multiply कर दो किसको, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, किससे, by the rationalizing factor. how to make any number, किसी भी नंबर को अगर आपको रैशनलाइज करना है तो कैसे करेंगे बेटा, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड. So what I have 1/√2. So it is under √2 here by under √2.
So what is the answer here? Root 2 by this. Tell me, root 2 into root 2. अगर root 2 को root 2 से multiply करते हैं, what is the answer? That is 2. So what we have done, हमने क्या किया? जो नंबर था वो कैसा था? Irrational. डिनोमिनेटर में कैसा नंबर था बेटा? इरेशनल. एंड नाउ इट इज रैशनल. कैसा बन गया? रैशनल. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव रैशनलाइज्ड द रियल नंबर. हमने क्या किया? नंबर को रैशनलाइज कर दिया. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल हियर. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ -1/√7. -1/√7. Okay, so first all will think of rationalizing factor. Hurry up. Yes, what is the rationalizing factor? Here rationalizing factor is √7. Okay, if negative is here, still it is √7. Okay, अगर negative denominator में है तब भी आप सब याद रखेंगे what is the rationalizing factor? That is √7. Okay, now how to rationalize it? Negative को ऊपर लेके जा सकते हैं? Yes. √7, if I am having, this is the rationalizing factor, multiply the numerator and denominator by √7. हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? √7 से. Got it? We multiply this number by this. So now what we got? -1 into √7, that is -√7. And this √7 into √7. देखो, √7 into √7 means you are writing it 2 times. आप क्या कर रहे हो? उसको 2 बार लिख रहे हो. So here with root cancel, and what is the answer? -√7/7. So is it rationalized now? Yes, answer is yes. हमने क्या किया? जो नंबर था उस नंबर को, डिनोमिनेटर को क्या कर दिया? रैशनलाइज. कैसे करते हैं रैशनलाइज? जो भी डिनोमिनेटर इरेशनल होगा उसको रैशनल बनाकर. Okay, this is the simplest example which I have taken here. Okay, now come to the next terms. Next terms अभी लिखेंगे. Note down in your notebook that rationalizing factor of, if the number is a by, the number is a by a plus minus b√x. If the number is a by a plus minus √bx, अगर ये आपके पास नंबर है तो क्या करें? Then rationalizing factor is opposite of it. तो rationalizing factor क्या होगा? That is a minus plus b√x. a minus plus. बार देखो बेटा. Here what we have a plus sign. आपके पास यहाँ पर क्या है? Plus sign. So what is the rationalizing factor? That is negative. Here it is negative. Number कैसा है? Negative. Now it is positive. So let's take an example here. 1/7 plus √2. 7 plus √2. तो इसका rationalizing factor क्या बनेगा? That is 7 minus √2. Okay. In telling it, write the same number. आपको नंबर को सेम लिखना है. जो भी नंबर होगा उसको सेम लिखना है. 7 plus √2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 7√2. But here, if it is plus sign, change it minus. Plus का क्या बन जाएगा? Minus. Same when you are having 5 minus √3. So what is the rationalizing factor? Question आता है that what is the rationalizing factor? So answer is 5 plus √3. What is the answer here? 5 plus √3. Okay. Now all will answer it. What is the rationalizing factor of 1/5 plus √2? 5 plus √2. What is the rationalizing factor of 1/5 plus √2? 1/5
2 minus 2. Answer it fast. Okay, so what is the rationalizing factor of 5 plus root 2? Answer is 5 minus root 2. And what is the rationalizing factor of it? So that is 2 plus under root 3. Okay, these two answers are there. 5 minus root 2 and 2 plus root 3. Okay, so this is how we can find out the rationalizing factor. Okay, so now let's see that how to rationalize it. अभी तो हमने सिर्फ ये देखा कि rationalizing factor क्या होता है ना. Now let's see that how to rationalize it. For example, what I do? 1 by 5 plus root 2. 1 by 5 plus root 2. मुझे क्या करना है? I want to rationalize it. मुझे क्या करना है बेटा? इसको rationalize करना है. So let's see that how to rationalize it. Multiply and divide with the rationalizing factor. Rationalizing factor we know how to find it. जो भी साइन होगा, जो भी टर्म होगी, पहले उसका एज इट इज लिखना है. And if there is a plus sign, we make it minus. मैंने माइनस का साइन आ जाएगा. And then multiply and divide. Okay. So answer is 1 को 5 minus root 2 से multiply कर रहे हैं. So some students have confusion बेटा that how to multiply it. Numerator के साथ numerator multiply होता है. How to multiply it? Numerator को numerator के साथ multiply करना होता है. And denominator with the denominator. Okay, so it is 5 minus root 2 divided by. Let's see this one. A plus b, and this is a minus b. A plus b into a minus b. So answer is a square minus b square. मतलब 5 whole square minus root 2 whole square. I am writing here 5 plus root 2 into 5 minus root 2. Here, so that will numerator will remain same. Numerator तो as it is रह जाएगा. And what is here? A square minus b square. So what is the square of 5? 5 का square क्या बनेगा? 25. And root 2. Root 2 का square कैसे? Square से root cancel out हो गया. तो क्या आएगा बेटा? Answer is root 5 minus root 2 divided by 25 minus 2. Answer is 23. तो क्या denominator rationalize हो गया? Yes, we have rationalized the denominator. Those who are having query, they can send me on WhatsApp. My video is finished. Okay, again telling it, just listen it. That how to rationalize any number. 1 by 5 plus root 2 था मेरे पास. You have to take the opposite sign. आपको opposite sign लेना है. Plus की जगह मैंने लिया minus. दोनों तरफ. जो नंबर है उसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं, उसी से ही डिवाइड. You have to take the same number and multiply and divide it. Now numerator with numerator multiply. 5 minus root 2. This a plus b into a minus b. A plus b into a minus b, that is a square minus b square. Okay, so a square 5 का square कितना होगा बेटा? That is 25. And root 2. Root 2 का square कैसे होता है? Square से root cancel, and that is 2. 25 minus 2, that is equal to 3. 23. Okay, the numerator as it is, and this is the answer. Okay, again one more example I am taking here, that how to rationalize any number. सबको आना चाहिए, because this is very important. This is the most important topic of this chapter, that how to rationalize the real number. Let's take one example here. 1 by 2 plus under root 5. 1 by 2 plus under root 5. Okay, so here first of all write down rationalizing factor is, it is 2 minus root 5. 2 minus root 5. 2 plus root 5 number था. Take the same value लेंगे, sign opposite ले लेंगे, plus की जगह क्या आ जाएगा? Minus. Now what is the next step? To multiply the numerator and denominator by the number. Multiply करते हैं. 2 minus root 5 and 2 minus root 5. नंबर ले लिया मैंने. 2 minus root 5, 2 minus root 5. सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से क्या करना है बेटा? डिवाइड. नाउ मल्टीप्लाई. 1 into 2 minus 5, it is 1 2 minus root 5. सेम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, सेम ही आएगा. ओके, डिनोमिनेटर. लेट्स सी दिस.
I'm writing it as it is 2 plus root 5 bracket close 2 minus root 5. Okay, 2 plus root 5, 2 minus root 5. Now, this is a plus b. This is a minus b. A plus b into a minus b क्या होता है? A square minus b square. कई बच्चे ऐसे करते हैं. They first write down a plus b, a minus b and then solve it. बेटा, if you are writing it, write in a rough corner. है ना? A square minus b square, that is 2 whole square minus root 5 whole square. 2 whole square minus root 5 whole square. दोबारा देखो. A plus b, a minus b. A square मतलब 2 का square, b square that is root 5 whole square. So 4 minus 5 that is equal to minus 1. Okay. Numerator को as it is लिखो because we have taken it as it is and denominator is minus 1. Denominator कितना बन गया बेटा? minus 1. Now you can adjust it. आप adjust करो. Plus 2 minus 1 multiply करेंगे तो minus 1. Minus और minus क्या हो जाएगा? Plus. Now still some student have confusion. मैम ये minus 1 एक के साथ जाना चाहिए था बेटा. This complete minus 1 is in denominator with the complete term. इसके साथ दोनों के साथ है. So we divide the number with the both the term. दोनों नंबर से हम क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं. Okay. So 2 by minus 1 is minus 2 and minus root 5 that is this. Okay. So this is what we have learned, that how to rationalize the values. Okay. Let's see the another one. And then you give the answer of it. Okay. Rationalize. Write down your notebooks and then click the photo and then send it to me. Rationalize 1 by 7 plus root 2. Rationalize 1 by 7 plus root 2. Question is 1 by 7 plus root 2. Okay. So we multiply it by 7 minus root 2. And here also 7 minus root 2. Multiplying the numerator and denominator. Numerator और denominator को किससे multiply किया बेटा? 7 minus root 2. So 1 into 7 minus root 2 that is same 7 minus root 2. In denominator it is 7 whole square minus root 2 whole square. Okay. So that is 7 minus root 2 by 7 square is 49 and root 2 square with root cancel that is 2. Answer is 7 minus root 2 divided by 47. So this is the answer. Okay. Let's take one more example here. Term is rationalize 1 by 7 plus 3 root 2. You have to rationalize this. 1 by 7 plus 3 root 2. Okay. So same. First write down the rationalizing factor. Rationalizing factor is बेटा देखो सेम टर्म जो आपको डिनोमिनेटर में टर्म है उसको लिखना है फर्स्ट. Okay. 7 root 3 root 2 and then if the positive sign is there, अगर आपके पास कैसी साइन है पॉजिटिव तो आपको यहाँ पर क्या लेना है नेगेटिव. दिस इज द ओनली डिफरेंस. यू हैव टू टेक द अपोजिट साइन. जो भी साइन हो उसकी अपोजिट साइन आपको क्या लेना है यहाँ पर लेना है. रैशनलाइजिंग फैक्टर. नाउ राइट डाउन 1 by 7 plus 3 root 2 multiply by 7 minus 3 root 2 divide by 7 minus 3 root 2. We multiply the and divide the rationalizing factor. Rationalizing factor को multiply किया और क्या किया divide. Now this into 1 that is same 7 minus 3 root 2 and denominator. This is the main important point. It is a, this is b. A minus b. So this total is b. बेटा root 2 नहीं है बस आपके पास total term है. Total term क्या है 3 root 2. Okay, we take the complete term 3 and root 2. So here 7 whole square minus 3 root 2 whole square. Got it? This is a and this is b. So write down
7 minus 3 root 2 as it is by 7 square that is 49 minus listen this 3 root 2 whole square कैसे करते हैं first to take square of 3 3 का square क्या होगा 9 root 2 का square कितना होता है बेटा 2 so 9 2 are 18 again telling it how to square this number 3 root 2 that is square of 3 is 9 and root 2 square is 2 yeah so what we got here that is 7 minus 3 root 2 divided by 3 root 2 divided by wait for a second by it is 9 minus 8 1 and 4 minus 1 that is 3 31 so this is the answer 7 minus 3 root 2 divided by 31 okay this is all about today you have to revise it okay some examples I will give to you you have to find out the rationalizing factor of that number okay and rationalize it okay this is your work to find out the rationalizing factor and rationalize the numbers okay thank you have a nice day